So namaskar all of you. Last class रे हमें discuss करथिलु conclusive proof विषय details of conclusive proof. Today we'll go for another related concept जोटा आगु को हमें sections रे भी देखिबा. आज basically we will be going for burden of proof, okay, and onus of proof. ठीक अछि. तापरे we will complete section 2 today. जहाँ बाकी थिला the most all the definitions we had seen, okay, जोथरे हमें may presume, shall presume और conclusive proof से तारी ऊपर हमें फोकस करूथिलु, राइट. सो तर आउ गोटिए सबसेक्शन रहउची, ओके, जोथरे की the relationship between BSA, okay, and IT Act, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ता विषय कुहाई. तो सेही पार्टा देखिबा. एंड देन वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 2 जोटा की इंपोर्टेंट आपनकर पार्ट्स उडा आसिला कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. ओके, व्हाट फैक्ट्स आर रेलेवेंट. तेणु जो फैक्ट गुड़ा आपण जानले कि एगुड़ा रेलेवेंट से गुड़ा ही आपण एडमिट करिवे कोर्ट रे. ओके, तो सेही कांसेप्ट उडा हम देखिबा. सो ए जो कॉन्सेप्ट्स हमें देखुचु बर्डन ऑफ प्रूफ आउ ओनस ऑफ प्रूफ, एटा बहुत जगह हमें कौन करू ना देखो इंटरचेंजेबली यूज कर दो. ओके, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ जस्ट खाली गोटे लाइन रे एक्सप्लेन कले कि बर्डन ऑफ प्रूफ टा कौन ना पूरा होलिस्टिक और एंटायर केस ऊपर है. इट इज एट ए मोर केस लेवल. ओके, whereas आउ तो जेहेतु केस लेवल रे सेटा जनरली शिफ्ट करिवन यदि बर्डन ऑफ प्रूफ गोटे पार्टी ऊपर अछि. ओके, तो अल्टीमेटली ताको सेटा प्रूफ करिया पे पड़िबो पूरा केस लेवल रे. ओके, बट यदि स्पेसिफिक किसी जिंस ऊपर गोटे जिंस प्रूफ करिया अछि गोटे पार्टी की आउ वन सी सेटा प्रूफ कर दोची तापरे सेटा नेक्स्ट पार्टी की ओके शिफ्ट करि जाउची से रिस्पांसिबिलिटी टा प्रूफ करिया पे ताको हमें ओनस ऑफ प्रूफ कोच. ओके, ता माने कोन ना इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, इट इज डायनामिक इन नेचर. ओके, एटा सबले आपनकर शिफ्ट करूथिबो. किंतु केबे केबे हमें जनरली एमपी कहू कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो जाउची. ओके, सो colloquially हमें कहू सेटा. ओके, बट दैट इज you know from the legal point of view what is the difference between burden of proof and onus of proof that we will study today. Okay, काली आपनकर तो मार्क्स आसिला उजेएस रो. तो जो माने मेंस लिखिथिले यू हैव गॉट योर मार्क्स. ओके, सो बहुत आगुरु भी कहि देथली से जा मार्क बाहर ता आगुरु खाता मगे पे. So most of you have already applied. जो मैंने अप्लाई करना है ये अप्लाई कर दियो सेटा. ओके, बिकॉज obviously natural माने मार्क्स तो लागुनी कि माने पूरा सब मेरिट रे दिया हिची बोली, because lot of people have failed जो माने को लॉ पेपर्स रे बहुत भलो मार्क्स अछि. ओके, मु काली गोटे पर्टिकुलर पिलांकर मार्कशीट आपन को देखौतली जे कि निश्चिंत भाबरे टॉप 10 भीतर रहितांते. jurisprudence constitution रे person has got 114 out of 150 but english से दिया छै 21. so the thing is that माने आउ केते पिला अछती लास्ट ईयर तांकर इंग्लिश रे 80s 90s रे थिला आ इथर को 25 32 31 एमपी भी रखाई. ओके, सो इंग्लिश ऑब्वियसली आपण जेमती पढुचंदे तो इंग्लिश रो भी जहा क्लासेस करी का अच्छे ऐप रे आपनकर ता छडा भी गोटे जिंस हला यू हैव टू एवरी डे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो टेक्निकल क्वेश्चंस उडा रहउची इंग्लिश पेपर रो फिजिकली ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन एंड वीक रे थरे के थरा प्रेसी सेटा आपण को करिया कथा. सेटा करले आपण को सुविधा टच रे रहबे आपण इंगाउ
बाकी जोटा नॉन टेक्निकल दिटा क्वेश्चन पड़ुची जोटा कि एसे आ गोटे हला आपनकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ठीक ठाक पॉइंट लिखले तो मार्क मिलिबा କଥା मिलिची पिला तो इथर को इवन जो माने जो टॉपर्स ही चंदी जने दि जन मतलब टॉप 10 भीतर जो चली मार्कशीट पठे देले ताको इंग्लिश मार्क्स भी सब माने लाइक बहुत भलो तो नहीं आगे मु कार भी 80s 90s रे देखिनी मु हाईएस्ट देखि छि पिला कर 70s रे 74 76 which you cannot say is a very good mark right माने गोटे गोटे भलो रैंक के पई बट एथरा को बोधे मार्किंग ही सेमती इंग्लिश ओके बहुत कम पिला से माने they have got over 40 anyway so take down the सर heading hmm सर नमस्कार सर yeah, मते no. लागुची माने मु जोड़ा को 150 मार्क अटेंड करके आस्थिली आ मु प्रोसीजरल और प्रॉपर्टी पेपर आपन को आगुर कहिछि जे मु सब अटेंड करि पालेनी तो 100 hmm. भितर मु अटेंड करके आस्थिली सर मु Hmm. कहया कथा जे मोर सेथिरे जेतिकी मार्क अछि मु जोड़ा को 150 मार्क अटेंड करके आस्थिली 6 टा की त माने से तार जो बीट्स ओडा सब अटेंड करी सब तो कलम क्वेश्चन लिख के आस्थिली सेही मार्क इज इक्वल्स टू ए मार्क केमती हला सर ସେଇଟା ହେଲା ଖାତା କେମିତି ଦେଖାଇଛି ସେଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ सर କେମିତି ଖାତା मु ପକେଇଲେ ହିଁ गोटे ଆପଣ कथा बहुत कन्फ्यूजन सर मु कहली मु 100 भितरे मार्क अटेंड करी जेतिकी मार्क रखली सेथिरे प्रोसीजरल रे आ प्रॉपर्टी रे आ मु जोटा 150 मार्क लेखे अटेंड करिके आसीथिली क्राइम रे टिके अधिक अछि आ क्राइम आउट डॉट रे आ मोर जो फैमिली लॉ सेतरे तो भलो लिखिके आसीथिली बहुत भलो लिखिके आसीथिली आ सेथिरे जेतिकी मार्क अछि जदि मु 100 मार्क ଫ୍ୟାମିଲି ର भितर अटेंड करिके सर मते गोटे एवरेज रे पकेଇ देला भलिया मते गोटे लागिला माने गोटे माने एवरेज मार्क एतिकी जदि अछि गोटे दिटा सब्जेक्ट रे आ देई दियो सेतिकी मार्क देई दियो गोटे एवरेज रे गोटे पकेई दियो माने मते एई टाइप रो लागिला जे मार्किंग टा माने एम्ति हेइची बोली ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ ଖାତା करेक्शन କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁଜ ଓକେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଖାତା କରେକ୍ସନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ପାରୁଛି କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସାମ୍ସ କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦଉଛି ଯେମିତି ଓଡିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ ସ୍କୁଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ କଲା ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପଡୁଥିଲା ଆଗରୁ हाँ एजुकेशन गोटे पेपर थिला इंग्लिश गोटे पेपर थिला जीके गोटे पेपर थिला ताको देखियो कि से स्पेशली से एजुकेशन पेपर गोरे ताको माने ड्यू टू वेरियस रीजंस माने प्रोफेसर्स माने एते माने राजी हो ना सेडा सब देखिया पे अदर इश्यूज आर आल्सो देयर ठीक अछि तो ताको एमसीक्यू कर देले सुविधा तले आपण मशीन रे ही चेक कर दे असुविधा कौन है कि ओजेएस रे आ ओडिशा सिविल सर्विस रे एगुड़ा जहाँ भी हेले आपन डेस्क्रिप्टिव एग्जाम ही रहइबो तेनु एते गुडे खाता 600 प्लस पिला समय कम देखिया पे लोक कम ओके जेना से तो देख परियो ना मिनिमम गोटे आपनकर एति यदि क्वालिफिकेशन अछि राइट आपनकर एबे करेंटली लॉ रे आपन जब देखिबे ओडिशा सारा लॉ रे प्रोफेसर लेवल रो लोक के जण अछंती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस रे कोच प्राइवेट कोच ठीक अछि तो से थ्रू जणा पडियो कि प्रॉब्लम ता कोन ओके तो एनीवे तो जेतले बहुत गुडे खाता देखिया पे थिबो आ कोन से इंग्लिश ता सबुटु सहज ओके पेपर जोठी कि आपण मार्क कटि परिबे एटा एई एबे नुह एटा माने बहुत वर्ष होला करचंती रजत सर को केस रु सेबेठु हमें देखछु जेतेबेले मार्क्स काटिबार थिबो काको एलिमिनेट करिबार थिबो इंग्लिश पेपर ता सबुटु सहज करिया पे ओके बट एनीवे अलग कथा एटा जो पर्सन माने गोटे तो इंग्लिश तो पूरा कैजुअलिटी हेची नेक्स्ट जो थरे पिलांकर एते भलो रहिनी रिलेटिवली सेटा हला पर्सनल लॉ रे आउ भी के जन पिला कटि जंती पर्सनल लॉ रे ओके 35 36 एमती भी रखछंती तो सेटा माने बहुत पिला नुह बट आफ्टर योर इंग्लिश नेक्स्ट टा पर्सनल लॉ रे मार्क्स कमिची ओके बाकी तो पेपर सब ठीक ठाक जଣା पड़ला केना पिला अछंती से माने बाकी सब 90s रे रखिचंती बट पर्सनल लॉ रे 60 जेची 70 जेची हां से 10 कोटी मार्क कमी जेची से दैट इज वेयर दे लॉस्ट ए प्लेस इन द लिस्ट एनीवे से सब से जो लॉ पेपर से 5 मार्क 10 मार्क एपर से पड़ो से ठीक अछि एटा आपनकर लेकिन ब्लैटेंटली जोटा संभवपर ही नुह जेमती मार्किंग से करिचंती इंग्लिश रे
ସେଥିରୁ it raises a lot of question. ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 150 ମାର୍କ୍ସ ଆନ୍ସର କରିକି ଆସିଛି ଇଂଲିଶ ପେପରରେ, ट्रांसलेशन रे 0 दे दियंतु, इंट्रांसलेशन रे 0 दे दियंतु, इवन प्रेसी रे भी 0 दे दियंतु हैला, बाकी तो 75 मार्क्स रहला ना एसे और कॉम्प्रिहेंशन। ओके, अनलेस सर पूरा एग्जैक्टली भूलभाल जदि से एग्जैक्टली सर जदि 75 मार्क्स गोटे टू 40 तो आराम आज्ञा रे रखियो गोटे पिला ठीक ठाक जे लिखि दिबो। हां, तो एमिति जो माने तो किछि रैशनल ही रहउनी आउ टाइम तो केबे भी सरी जीवन इंग्लिश पेपर रे रादर घंटे थिबो कि घंटे रु अधिका थिबो अपन सारी की बसिबे। तो सेई केस रे एमिति मार्क्स के माने किछि तार रीजनिंग ही मिलुनी। ओके, सो देखा जाओ, इट्स मैटर ऑफ लक एंड अदर थिंग्स। से भाई खाता समस्त को मगी के ताको एनालिसिस एथरा से माने मत लागुची देरी करिवे खाता दवा पे समस्त मगवे खाता। ओके, तो से माने 3 to 5 months टू भी और देरी करिवे। ओके, जेते देरी कले कोन से जब सेमति सब भूलभाल हेतिबो ताले यू नो যদি খাতা চেকিং করনथिबे कि करनथिबे सेटा अलग। बट ए जो गोटे जगह जोठी 10 मार्क दवा कथा 2 मार्क देकी छाड़ दी तार आउ किछु करबी होबनी, कोर्ट तो ताको एंटरटेन करिवे। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। ओके, तो कौन कहबो माने मु तो सर से गोटे जिनिस खाली मार्क मु बुझिपानी जे जदि 150 मार्क अटेंड करिकी तमरो एतिकी कम मार्क रहिबो ताले तमे कम एक्सपेक्ट करिवो जे माने हां ठीक अछि से 150 मार्क रो 75 मार्क्स मोर पूरा कटि ही जाऊ, 25 मार्क्स तो देबे ना, तमे सेतिकी तो एक्सपेक्ट कर परिबो। जदि ताठू आउ सी कमे दउचंती एमिति काटि कुटि के एवरेज रे पके दउचंती, जदि दि तीनटा सब्जेक्ट रे एवरेज रे पके देला हले एवरेज रे पके देबे ताले तमे कोन करिवो, माने ई सिचुएशन रे कोन करा जिवो? मु एक्चुअली माने मु भाबु जे लॉटरी टाइप रो करसुनी कोन। हां, कहा को एटी करा many students have got above 60 also। टॉपर्स माने जो माने सब अच्छे माने जो भलो रैंक्स जो माने रखछथि तांको तो जेति जण मते मार्क्स पठै छथि, they have scored in the range of 65 to 70। मु 80 रे कहा मार्क देखिनी इंग्लिश रे। आरो वर्ष जो पिला 90 से रखिथिले से माने ए वर्ष फेल हे जंदी। ओके, केमती सेटा होउची माने एते सब्जेक्टिविटी केमती आसीबो गोटे पिलारो इंग्लिश स्टैंडर्ड एथि कि से लास्ट ईयर 80 रखथिला आउ स्टैंडर्ड बस रे एते खसी गला कि से एबे रखिची माने बिलो 40। सो दैट इज समथिंग व्हिच एटा भी आई थिंक एट एप्रोप्रिएट काली मु जन से कथा हेतिली तो एप्रोप्रिएट लेवल रे दे विल बी टेकिंग इट अप। ओके, बट थिंग इज दैट एटा हबा कथा नु हो माने ए पिला एते परिश्रम करछथि आउ एते माने ठीक अछि खाता देखि पाउन कि लोक इंटरेस्टेड होना तो बहुत गुड रीजंस अछि। ओके, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। गोटे हला कि समय रो अब ए जो खाता देखिया बहुत ही माने डिटेल्ड जिंस आउ जो प्रोफेसर्स को कथा मैं कहूछु कि एसोसिएट प्रोफेसर्स को कथा कहूछु तांकर सेमती मोटिवेशन कोन अछि से खाता देखिया पे। ओके, आमे मनीष जो काम करछि तार इंट्रिंसिक किछि मोटिवेशन थाए। आपण ओजेएस में पढुछथि काई ना आपण को एक जिल अछि, ठीक अछि मते गोटे एटा मो चाइल्डहुड ड्रीम कि एटा मो पेरेंट्स को ड्रीम कि एटा मते लोगों को जस्टिस सर्व करिया पे गोटे इंटरेस्ट अछि, सेति पे आपण लागि छथि। ओके, सेमती जे खाता चेक करिवो तार इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन अछि। जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी रु आसीची ऑर्डर आपण जे चेक करिवे आ आपण मना करि परिबेनी आपण ऑप्शन, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर ऑनरियम से दोचंती। ये सब एसोसिएट प्रोफेसर्स को सैलरी बहुत हाई। ओके, यूजीसी स्केल रे तेणु से पैसाटा मैटर नुह। तापरे जेतु ओपन भी खाताटा दिया होची अवश्य ताको ना केबे ओपीसी रिवील करेनी, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, से किए खाता देखछि कोन तो ओपीसी खाली एक होय कि आमे जदी कोर्ट कहिवो कि किए खाता देखथिले कोन ताको पचारो सी ओपीसी ताको पचाई कि ताको आंसर ता दिए। बट ताको नै कि आसीबा कोर्ट को किबा ताको ना रिवील करिवे सेटा कॉन्फिडेंशियल जिंस थाए। ओके, तो किए काई कि ए सब जिंस पई पसिबो तो बहुत जण मना कर दियंती कि सेमान ताको कॉन्ट्रैक्ट्स लगे कि एंश्योर करंती कि सेमान को ही जिंसला ना पड़े। ओके, एनीवे जहां भी हो बट डज नॉट augur well for the system।
ପିଲା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ 114 ରଖିଛି, ବାକି ସବୁ ପେପର୍ସ ରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି। ଓକେ, ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା କଥା, ବଟ୍ ତାକୁ ଆପଣ 21 ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ପାଇ ମାନେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, and that ସେ କନଭେଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, and ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଆଇସିଏସସି ସ୍କୁଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ର କମ୍ପିଟିସନ ସେଟା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଆଇସିଏସସି ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି, ଓକେ, ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ସେ ଝିଅ ସେ ରାଙ୍କ 1 ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ 9th standard କି 10th standard ରେ ପଢୁଥିଲେ। ଓକେ, she has also got sub 30 marks। ମତେ ଟିକେ ବିଲିଭ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ ଓପିଏସସି ଏମିତି ସକିଂ ଜିନିଷ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟୋରିଜ ଥାଏ। ଏଥରକ ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଇଟ୍ ହାଜ ଆଫେକ୍ଟେଡ ମୋର ଦେନ୍ 550 ପିପଲ, ରାଇଟ୍। ଦେଖିବା ସେଇଟା, ତାକୁ ଖାତା ମଗେଇଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ନାଉ ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଦ ହେଡିଂ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ versus onus of proof। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ପଏଣ୍ଟ ଏଥର ରହିବ। ସବୁ ଯାହା କହିଲି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଶିଫ୍ଟ କରେନି, ଓନସ୍ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଟା ଶିଫ୍ଟ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସବୁଠୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓକେ, ବଟ୍ ଲିଖିବା ଆମେ କଣ? ତ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ମାନେ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଯଦି ଆସର୍ଟ କରୁଛି, କ୍ଲେମ କରୁଛି, ଓକେ, କି ଏଇ ଲୋକ ଆସିକି ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ଓକେ, କି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ସମଥିଙ୍ଗ ସମवन ଇଜ କ୍ଲେମିଂ। ତ ନର୍ମାଲି ତା ରୁଲଟା ହେଲା ଯିଏ ଯାହା କ୍ଲେମ କଲା, ଓକେ, ସେ ବେସିକାଲି ସେଇ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ତାକୁ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଜେନେରାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କି who will determine a fact। ଓକେ, କାହା ପାଖରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ବେସିକାଲି କନସେପ୍ଟ ଅଫ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ। ଓକେ, କୋଉ ପାର୍ଟି ଅବଲାଇଜଡ ଅଛି, କୋଉ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ବର୍ଡନ ଟା ଅଛି, କି ସେ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଆସର୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ, ବିଏସଏ ରେ ଏଟା ଆମେ 100 ପରେ ଦେଖିବା, 104 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ତା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ସେକ୍ସନ୍ସ ରେ ଆମେ ଏ କନସେପ୍ଟ ଟା ୟୁଜ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ। ହେଲା, ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ फर्स्ट तरफ डेफिनेशन टा नहीं जानते। डेफिनेशन मीन्स आमे जहा एग्जाम रे जो डेफिनेशन लिखिबा रा ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ଥିବ, ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ ରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଟାରୁ ହିଁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ ଟେକ୍ ଡାଉନ୍ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ ए पार्टी burden of proof means the obligation of a party burden of proof means the obligation of a party to establish facts, to establish facts,
to succeed in a case. To establish facts to succeed in a case. Okay. तापर एटा जस्ट खाली गोटे बीएसए पॉइंट ऑफ व्यू रु कि केतेबेले हम एटा पढिबा ए जो कांसेप्ट गुडा आपण देखुचंती बर्डन ऑफ प्रूफ हला ए कांसेप्ट को रिलेटेड इफ यू कैन रिमेंबर द ओके रेलेवेंट मैक्सिम जोटा कि गोटे कांसेप्ट संगे रिलेटेड तेणु बर्डन ऑफ प्रूफ जेतले पढला मु से मैक्सिम ता लिखि देली ओके ताले मते गोटे दी मार्क एक्स्ट्रा मिली पारे राइट सो बीएसए रो रेलेवेंट प्रोविजंस जदि आपण लिखिबे सो section 104 to around 111 okay 104 generally burden of proof विषय कहूची okay then 106 आपण को burden of proof as to particular facts आउ 107 रो 111 specific cases विषय कहूची कि डेथ केस रे burden of proof केते वर्ष जदी से लोक आसीबोनी ताले presume to die presume to be dead etc ए सब जिंस आपनकर अछि ओके तो से 104 रु 111 पाखा पाखी आपण बहुत गुडे सेक्शन से पाई जिबे जोडा बीएसए कथा कहूची भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके तापरे नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु द प्रिंसिपल ओके Sir, हां so what is the relevant maxim on burden of yeah proof? I'm going there in principle Okay. under Okay, sir. principle we'll be writing the maxim okay so प्रिंसिपल कौन जनरल प्रिंसिपल हला ना हम एंती कहूछु कि जणे जदी किछि गोटे असर्ट करूची ताको ही प्रूफ करिया पड़ियो ठीक अछि आपण कहउछनी मते कि यू नो यू हैव टेकन 100 रुपीस फ्रॉम माय पर्स यू आर असर्टिंग इट ना यू नीड टू प्रूव इट मु मना करछु मु डिनाई करछु ना ना मु तो सेमति किछि करिनी मु तो पर्स पाखरे ही नथिली व्हाटएवर ठीक अछि सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द जनरल प्रिंसिपल इज दैट he who asserts must prove okay not he who denies this is the general principle and there are exceptions to it okay जोडा मु गोटे क्लास रे गुरु कहितली जेमति आपनकर पॉक्सो केसेस हला पॉक्सो केस रे कोन हुए ना सेथरे बेसिकली जे अक्यूज्ड अछि ओके बर्डन ऑफ प्रूफ हला ता ऊपर पडुची कि ना मु एटा करिनी ठीक अछि तो प्रोसिक्यूशन तो कहउची कि हां ये एटा एक गोटे छोट पिला संगे ए करची राइट तो नॉर्मल सिचुएशन रे प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करार अछि कि हां से सेमति सब करची बट देयर आर सर्टेन यू नो एक्सेप्शनल केसेस जोठी की बर्डन ऑफ प्रूफ टा एक्चुअली ओके शिफ्ट करी नॉट शिफ्ट बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ इज प्लेस्ड ऑन ओके जे की accused अछि ता ऊपर तो पॉक्सो केसेस ता भीतर गोटे अदर मेनी एग्जांपल्स आर आल्सो देयर ओके सो जस्ट यू कैन टेक डाउन this is the principle you can take it down equi-affirmate, non-equi-negate, incumbent, probatio. Okay, एमती ना सबुडा तो मन रखी होबनी किंतु मेजरली इफ यू कैन रिमेंबर एटा प्रैक्टिस रो कथा आपण लिखि देले कातरे मजे मजे टिके देखुथिबे जदी न मन पड़ले ठीक अछि किछ असुविधा नै तार इंग्लिश ता मानेटा सिंपल मीनिंग ता लिखि देबे दैट वन हु asserts needs to prove okay not one who denies एटा जनरल प्रिंसिपल some exceptions are there पॉक्सो रो जिंते हम देखिलु and other exceptions are also there जेतले हमें बर्डन ऑफ प्रूफ को जीवा सेतबेले हमें आउरी डिटेल्स से पढिबो आउ कोन एक्सेप्शंस ऑलवेज रिमेंबर exceptions are very very important मेंस ପାଇଁ and interview ପାଇଁ भी this is a general rule
आर एक्सेप्शन कौन कौन सब जगह एटा पचार परंतु तो सब जेतबे जहां भी आपण देखुथिबे सेतले एक्सेप्शन सुडा देखुथिबे राइट जो भी स्टैट्यूट पढुछे एक्सेप्शंस आर वेरी इंपोर्टेंट यू फोकस ऑन एक्सेप्शंस आपणकर जो नोट्स अछि सेतरे आपण एक्सेप्शन थोड़ा लिखिबे तो आपण देखिबे बहुत गुडे जिंस आपणकर क्लियर भी हे जिवो आउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जदि मु कहबी यू विल आल्सो गेट बेटर मार्क्स ओके सो दिस इज द प्रिंसिपल on which the concept of burden of proof lies okay तापरे नेक्स्ट पॉइंट को जिबा एग्जांपल जोडा मु कहले सर एग्जांपल प्रिंसिपल में कौन लिखी था? प्रिंसिपल जस्ट यू जस्ट टेक डाउन दिस लिखिबे ओदे लिखि दियो द कांसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ द कांसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ is based on the following legal maxim is based on the following legal maxim तापरे ए maxim ता लिखंतु equi affirmat non equi negate हला ता मानेटा बुझंतु equi affirmat ओके जे affirm जे assert करूची ओके non equi negate से लोक नुह जे मना करूची ओके incumbent probatio means he has to basically okay prove it whatever he is asserting right so based on the legal maxim ta likhi diyantu which means tapare eta likhi debe which means he who asserts must prove not he who denies which means he who asserts must prove not he who denies लिखिले so next Yes. part तक आसंतु so এটা হলো principle of burden of proof ঠিক আছে now examples আছে you can give some examples okay murder case रे तो murder case रे prosecution कहूची ठीक अछि कि accuse मारिची तो prosecution को establish करे पड़िबो guilt okay beyond reasonable doubt right तो ये भी गोटे concept beyond reasonable doubt जोटा हमें कोथरे यूज करछु क्रिमिनल केसेस ओके तो एविडेंस लॉ रे सेटा कि आपण जेतले गोटे एविडेंस दउचंती सेटा गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर रहइबा कथा ओके ताहले ही जाएंगे कन्विक्शन रो चांसेस अछि क्रिमिनल केसेस से ओके जोटा कि हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें कहूछु आ गोटे हैला सिविल केसेस जोटा आपण यूज करचंती ताकू प्रिपॉन्डरेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज कह जाउछ ओके सिगुडा भी किछिटा कांसेप्ट्स विल सी लेटर जेतले सेगुडा आसीबो राइट सो if you see that normally as per the principle you have just written the burden of proof generally lies on the okay person or the party that asserts right এটা হলো burden of proof তারপরে onus of proof দেখিও ঠিক আছে onus of proof রে কোন কি पर्टिकुलर स्टेज रे ओके ट्रायल रे गोटे पर्टिकुलर स्टेज रे द ड्यूटी टू प्रोड्यूस सर्टेन एविडेंस ठीक है डिफरेंस जोटा फर्स्ट टू कहि दिली ओनर्स ऑफ प्रूफ टा डायनामिक ओके से शिफ्ट करि परियो तो जड़े पार्टी जदी गोटे पर्टिकुलर जिंस प्रूफ कर देला ताले ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट टू द अदर पार्टी ओके so as the different stages of the trial progresses this onus of proof keeps on shifting okay so burden of proof ta kono that is fixed and constant onus of proof ta is shifting and dynamic ठीक है so
that is basically your onus of proof. तो just खाली गोटे लाइन रो definition लिखि दियंतु. Onus of proof okay, so take down. Onus of proof refers to the duty. Onus of proof refers to the duty to produce evidence to produce evidence to produce evidence at a particular stage at a particular stage in a trial in a trial. Continue. As the case progresses, as the case progresses, the onus of proof as the case progresses, the onus of proof can shift from one party to another. Can shift from one party to another. Okay. किछटा एग्जांपल तर आपण नै परिबे लाइक सपोज गोटे आपणकर सूट अछि ओके पोजेशन को नै कि आउ प्लेंटिफ जे अछि से ओनरशिप प्रूफ कर देला कोर्ट रे दैट ही इज द ओनर ओके ताले एबे डिफेंडेंट जे अछि ओनर्स ताकू शिफ्ट कला ताकू प्रूफ करिया पे पड़िबो कोन सी ओनरशिप प्रूफ कर देलानी ऑलरेडी तो ताकू में भी प्रूफ करिया पड़िबो एडवर्स पोजीशन ओके सो एग्जांपल रे लिखंतु in a suit for possession in a suit for possession example okay in a suit for possession once the plaintiff proves ownership once the plaintiff proves ownership the owner shifts to the defendant the owner shifts to the defendant to prove adverse possession the owners shifts to the defendant to prove adverse possession as was held in as was held in K.S. Suresh versus G. Gopalan K.S. Suresh versus G. Gopalan by the Kerala High Court. Excuse me.
ठीक है जी. Now coming to the difference between them, right? Difference between them. तो differences ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ difference ଦେଇପାରିବା. तो first ଆପଣ tabular form ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ. ओके, टेबल हिसाब रे तापर ଆମେ ଏଟାର detail analysis କରିବା. ଠିକ ଅଛି. So burden of proof versus onus of proof. So short forms use କରୁଛି. This is burden of proof, onus of proof, ओके. फर्स्ट मैट्रिक्स टा लिखिबे माने कोथरे आपनकर बेसिकली the point on which you are differentiating between the two variables सेटा देखिए प्रथमे. So प्रथमे हैला नेचर, burden of proof आउ onus of proof रो. So point number 1, nature. See, burden of proof, always remember the nature ta hela. Okay, what do you mean by nature? एठी हमें nature माने कौन ना, does it involve, okay, showing creation or taking away of rights, or does it involve only the procedure? Okay, procedural part. सेटा हला हमें nature कथा कहूँ. तो burden of proof रे कौन होची ना, it is substantive in nature. ଆଉ onus of proof रे कौन, it is procedural in nature. ठीक अछि. तो ସେଇଟା first, तापर हम तार डिस्कशन टा पर आपण आगे एटा लिखि दियंतु, then we will discuss on this part. एटा ना 5 मार्क क्वेश्चन पे एमती लिखा हबो. 10 रु 15 माने 10 मार्क ऊपर पढ़ले तापर हम जो एक्सप्लेनेशन लिखियो से टाइप रो आपण लिखियो. ओके. सो प्रथमे हला नेचर. नेचर टा substantive in case of burden of proof or procedural in case of onus of proof. Okay, because it is a part of procedure. Okay, it will keep on changing. कोटे किसी proof दे आला onus shift कला हो जाने को. Okay, सी आओ जदी किसी ताटू और strong evidence दे दला ये इन सेटा shift करा तो at different stages it may keep shifting. Second है permanence किंबा does it shift during trial? So shifts during trial. Does it shift during the trial? So BOP रे no. Okay. Out onus of proof रे yes. Right. तापरे काहा ऊपर सेटा रहउची, काहा ऊपर फिक्स हेची burden of proof टा, काहा ऊपर फिक्स हुए onus of proof टा. So next Sir, point of sir, when we were writing differences of like BSA and Indian Evidence Act, in the previous classes, we you said that burden of proof in BSA has like basically become like it can shift from person to person. So does that is that like an exception or uh, is no no that like technically speaking we interchange and say burden of proof shifts from this to this. Okay. Okay, but actually burden of proof as per the concept and the definition never shifts. Okay, what shifts is the onus of proof, right? But colloquially we use both the terms, okay, interchangeably, which is fine for general understanding, but technically burden of proof is always fixed. What I was telling that day was the difference between the Indian Evidence Act and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam related to burden of proof. Okay, there is a specific
cases which we'll see or specific clauses which are there in case of Indian Evidence Act which related to your the tenancies. A tenant and the relation between your landlord and the tenant, that has changed a bit under VSA. So once we go to that part, certain relationships, the burden of proof, there it has changed. Concept remains the same. Burden of proof never changes. What changes is the onus of proof. Okay. Okay, sir. So next point, on which party it is fixed. So the sub point will be fixed on. Fixed on. So number 3. So obviously, as per that maxim or that principle, we know it is fixed on. Burden of proof is fixed on the party asserting the fact. And onus of proof is not fixed on anyone. It changes depending on the evidence presented. So that is what you have to write. Under burden of proof, take down party asserting the fact. Fixed on party asserting the fact. And under onus of proof, take down changes depending on evidence presented. Changes depending on evidence presented. Okay. Next, very important point of distinction is the legal basis of it. What is the legal basis of your onus of proof or burden of proof? Burden of proof is explicitly given in the statute. In the Indian Evidence Act, it was given. In the Bharatiya Sakshi Adhiniyam also it is given. Explicitly given. But onus of proof has never been mentioned anywhere. That is implied. That is implicit. During the stages of trial. When the trial is conducted, there you will get this shifting of the onus of proof. It is not mentioned exclusively or explicitly in the statute. So next point number 4 is legal basis. So under BOP, take down explicit under the act, like section 104, etc. Act means we are talking about BSA. Act भी कहया କଥା ନୁହଁ ତାକୁ, अधिनियम. Explicit under the अधिनियम, like section 104, etc. ଆଉ onus of proof under रे सेठी लेखन्तु inferred from conduct of trial. Explicitly mentioned in statute. Inferred from conduct of trial. Inferred from conduct of trial.
तापर गोटे लास्ट गोटे एग्जांपल दबा एटा कोडी लिखिबे जे 5 मार्क क्वेश्चन पड़ 5 पॉइंट ए टाइप लिखिबे शॉर्ट आंसर जोड़ा लिखुछ ओके कि अलगा को ओएसजेएस करी करे जेमती 2 मार्क क्वेश्चन पड़ 3 मार्क क्वेश्चन पड़ ओके ताले एमती अपन लिखि परिबे बट जदि 10 मार्क रो पड़ची 15 मार्क रो पड़ची then we will write like after this I'll dictate that normally जेमती हम लिखुछ ओके 5-6टा बेसिक पॉइंट्स टी हमको सेठी लिखिया पे पड़ी so number 5 take some examples okay so example re you can take lot of examples you can take burden of proof re okay prosecution proving guilt in criminal case तो एटा प्रोसिक्यूशन ऊपर ही रुहे ठीक है एक्सेप्शन मु कहि छी पोक्सो केस उडा किछिटा एक्सेप्शन अछि बट जनरल जिंसो हला कि prosecution proving guilt in criminal case okay that will be an example of burden of proof तापरे onus of proof under रे बहुत गुड एग्जांपल्स देख परिबे आपण accused proving alibi once defense is raised accused proving alibi once defense is raised I hope all of you know what is the concept of an alibi okay the author like you have some proof that at that point of time you are present or doing something else okay which there are witnesses or there is some other kind of proof to okay ascertain what you are saying suppose apanku say je accused अछि ताको कुआउची कि से एई मर्डर टा करची के थेफ्ट टा करची accused पाखरे सीसीटीवी फुटेज अछि किंबा तार लॉग एंट्री अछि कि जहा भी अछि अलगा किछि प्रूफ अछि कि आई विटनेस अछन ता पाखरे कि से ता सांग मानक संगे एई होटल रे ओके से टाइम रे थिला होटल रो मैनेजर देखचंती अलगा गेस्ट माने देखचंती होटल रो सीसीटीवी कैमरा ताको कैप्चर करिछि दैट इज द प्रूफ ऑफ alibi दैट मते प्रोसिक्यूशन जो जगह रे कहूची ए जगह रे ये क्राइम कला क्राइम सीन रे मु नथिली एट द पॉइंट ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम सीन रे मु नथिली मु आ गोटे दूर रे कि आ कोठी अलगा जगह रे थिली ओके सेठी आ बहुत दूर जगह रे थिली राइट आ मो पाखे दिया है प्रूफ अछि इज द प्रूफ ऑफ alibi राइट हमें पढ़िबा एक्चुअली वेरियस थ्योरीज आर देयर रिलेटेड टू इट ओके गोटे हला डिस्टेंस प्रॉक्सिमेट की रिमोट सेटा हमको देखिया पड़िबो राइट जेमति द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटी एटा आपनकर कोन जोटा क्रिमिनल ट्रायल रे एटा देखा जाय सपोज जोटी क्राइम सीन क्राइम जोटी हेची मु आलाबाई दोची कि भाई सेटू मु 200 मीटर दूर रे गोटे होटल रे बसथि ताहले कोर्ट को देखिया पड़िबो कि ये 200 मीटर जीवा पे आकु केते टाइम लागथांदा एमती किछि विंडो अछि कि ओके किबा एमिति किछि प्रूफ अछि कि जेउ टाइम रे से क्राइम टा हेची टोटली 1 आवर की 2 आवर्स ये लोको सेठी ही थिला बसिथिला सेठी कोरी जगह रे ना जदी खाली एमती टिके प्रूफ अछि कि टिके गोटे यू नो कि हां 10 मिनिट थिला देन प्रॉक्सिमिटी बट सेमिति प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस भी अछि 500 किलोमीटर दूर रे अछि ओके सिंपली नॉट पॉसिबल कि आसी कि घंटे भीतर कोंड कर दे पळेबो 500 किलोमीटर दूर रे अछि अलगा देश रे अछि कि अलगा एते दूर रे अछि कि इट इज वेरी रिमोट ओके सेठी से आसी कि एठी जिनसरा कर देई कि जाई परिबो ओके एंती बहुत गुडे प्रिंसिपल्स अछि जोटा आपण क्रिमिनल लॉ पढिबे प्लस एविडेंस लॉ रे भी तेतरे हमें दैट वी विल सी ओके नाउ लेकिले एटा एला 5 मार्क खंडे
क्वेश्चन जदि पड़िबो देन इट इज फाइन एटा हमें पढ़बे राइट बट जदि टिके एलाबोरेट पड़ला देन we need some more points and obviously we need some okay जो वे रे हमें लिखुतु आगुरु सेही वे रे हमर को लिखबार अछि जो पॉइंट गुड़ा मु कहि देछि मु और ताको रिपीट करूनी ओके जो अलगा पॉइंट्स गुड़ा से गुड़ा हमें कर पर ठीक है मु पूरा अपन नोट्स तो बनाउछन सो आई विल जस्ट डिक्टेट ऑल द पॉइंट्स ओके so continue with that तो एटा टेबुलर फॉर्म रे टिके क्रीज पिन पॉइंटेड अछि टिके एलाबोरेट फॉर्म ता में लिखिबा so continue with that differences so now point number 1 definition प्रथमटा डेफिनेशन एटी हमें से गुड़ा ता ऊपर एते फोकस करनो प्रिंसिपल घरिक हमें देखि डेफिनेशन टेक डाउन प्रथमे बर्डन ऑफ प्रूफ लिखिबे तापर ओनर्स ऑफ प्रूफ लिखिबे और यू यूज बीओपी एंड ओपी ओके so number 1 definition so BOP रे लिखंदु the obligation to prove the assertion or allegations made in a case definition okay burden of proof कोन onus of proof कोन तो burden of proof रे ता definition हला the obligation to prove the assertions or allegations made in a case okay तापरे से डेफिनेशन अंडर रे सेकंड पार्ट रे ओओपी रे लिखंदु ओनर्स ऑफ प्रूफ रे द ड्यूटी टू प्रोड्यूस एविडेंस the duty to produce evidence to support or refute the duty to produce evidence to support or refute refute a particular fact or issue support or refute a particular fact or issue a particular fact or issue hela eta point number 1 second point scope what is the scope of burden of proof what is the scope of onus of proof so second point likhantu scope likhile so first sub point BOP under re likhantu encompasses the responsibility to establish the entire case encompasses the responsibility ENCOMPASSES encompasses the responsibility to establish the entire case ଆଉ OOP ରେ ଲେଖନ୍ତୁ pertains to specific facts or issues pertains to specific facts or issues within the broader case pertains to specific facts or issues within the broader case okay third point of difference is constancy okay constant की dynamic so 3 is constancy so BOP रे लिखंदु burden of proof under रे remains constant throughout the trial and does not shift between parties तो आमे जो colloquially कहो ना कि burden of proof shift करियला तो what we are actually meaning is onus of proof not burden of proof does not shift okay remains constant throughout the trial and does not shift between the parties तापरे onus of proof can shift from one party to another can shift from one party to another
as the case progresses, and evidence is presented, can shift from one party to another as the case progresses and evidence is presented. Okay. Tapare point number 4. That is the legal basis. So BOP re lekhandu, explicitly mentioned in the adhiniyam, in sections like 104 to 117. Different points रे सेटा mention कराइछ. तापरे onus of proof not explicitly mentioned in the adhiniyam. Okay. तापरे fifth point जोटा की fixed on जोटा में लिखथिलु ये रे से टाइप रो responsibility. तो कहा काम सेटा प्रूफ करियो. ओके. So BOP की फर्स्ट आसंदो under burden of proof, take down, lies with the party asserting a claim or accusation. Lies with the party asserting a claim or accusation. Asserting a claim or accusation. ACCUSATION, accusation. तापरे OOP रे लिखंदो, initially lies with the party who would fail if no evidence were presented, but may shift based on who would fail if no evidence were presented, but may shift based on the evidence introduced. But may shift based on the evidence introduced. Hello. So, tamane kona na, I hope you understand the meaning. Initially lies with the party who would fail if no evidence were presented. ठीक अछि. तो onus of proof initially ता ऊपर रहउछि कि जदि से किछि proof दबनी then he would fail. Okay. तबने से जो fact ता से proof करू पे चाहूछि कि से सेटा मना करूछि. Okay, he will fail in his attempt. Right. किंतु जदि से सेटा proof करि दउछि then the onus of proof shifts. ओके से कौन एविडेंस इंट्रोड्यूस करूची कौन एविडेंस दउची ता ऊपर डिपेंड करे. से यदि स्ट्रांग एविडेंस दे दउची ओके ताले ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट करिवो आर पार्टी. सो दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी जोटा मैं कहूची. तापरे पॉइंट नंबर 6 डिफरेंट टाइप रो केस रे
केमिति आपण ताको अप्लाई करछन सिविल केस रे केमिति होची क्रिमिनल केस रे केमिति होची सो नंबर 6 टेक डाउन एप्लीकेशन इन सिविल केसेस application in civil cases application in civil cases अच्छा वीकली टेस्ट रे तो जहां से तारो सिलेबस ऑलरेडी देखि होची बट एटा हमें जति की आजि पर्यंत कंप्लीट करिचु वी विल हैव अ टेस्ट ओके आई होप एमसीक्यू टेस्ट गोटे राइट सो वी विल हैव 50 क्वेश्चंस ओके 40 मिनट्स ठीक अछि काली हम एटा करिबा आफ्टर क्लास टाइम नॉट इन द क्लास टाइम तोडा ऐप रे ही देबे आपण ओके मु ताको लाइव कर देबी काली आई विल टेल यू द टाइम ऑफ क्लास टाइम ओके 10टा बेलू लाइव कर दो सकाळ राइट यू कैन गिव द टेस्ट यू कैन सी all will be conceptual questions okay memory की road टा question किछि रहइबनी concept आपण कोन बुझिछन सेटा बेसी इंपोर्टेंट okay so application in civil cases take down first BOP रो लिखंदु typically rests with the plaintiff to establish their claim civil cases typically rests with the plaintiff to establish their claim typically rests with the plaintiff to establish their claim तापरे onus of proof may shift to the defendant may shift to the defendant once the plaintiff presents a prima facie case PRIMA FACIE prima facie case एमती केते फ्रेजेस अछि जोड़ा हमें यूज करछु प्राइमा फेसी माने कोन सिंपल इंग्लिश रे ऑन द फेस ऑफ इट जहां देखा जाउछि प्राइमा फेसी ओके तो एटा हला सिविल केस रे कोन एप्लीकेशन रहउछि क्रिमिनल केस रे ताले कोन रहइबो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जनरल रूल हला द प्रोसिक्यूशन रो काम ताकू प्रूव करियार अछि exceptions like POXO and all okay that also exist right so point number 7 application in criminal cases okay application in criminal cases so take down BOP रे लिखंतु burden of proof रे always lies with the prosecution to prove the accused's guilt अवश्य always term ता यूज करिवा ठीक हबनी exceptions अछि ओके मोस्टली अपन लिख पारि ओके बट जनरल प्रिंसिपल तो हला प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करे पड़े ओके प्रोसिक्यूशन जदी कहूची जने मर्डर कर देची जने या क्राइम करची तो से ताको ही प्रूव करे पड़िबो ओके बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जे अक्यूज्ड अछि से करिते राइट always lies on the prosecution or mostly lies on the prosecution or generally lies with the prosecution to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt तापर आसिला onus of proof तो ये केस रे कौन होची क्रिमिनल केसेस रे टेक डाउन मे शिफ्ट टू द डिफेंस
may shift to the defense if they raise specific defenses or exceptions. May shift to the defense if they raise specific defenses or exceptions. May shift to the defense if they raise specific defenses or exceptions. Criminal case. Okay, how exceptions we generally ଅଛି? Okay, कौन जेमती कि हमारा से पॉक्सो केस that is an exception to the general rule. There the prosecution उपरे burden of proof टा रहुनी सेटा okay prosecution उपरे जे आपनकर accused अछि ता उपरे ही ताकू proof करे पड़िबो मु एटा करिनी. Okay, which is an exception to the general rule in criminal cases. तापरे question point number 8 को आसंतु. Impact of non-presentation. Okay, what does that mean? Impact of non-presentation. Impact of non-presentation. Suppose upon a burden of proof टा present कलेनी किंबा onus of proof टा present कलेनी ताले केस ऊपर तार कोन प्रभाव पड़ियो आपण हारी जिवे कि कोन करिवे सेटा. So first BOP रे लिखंतु. Failure to discharge results in the party's failure in the case. Failure to discharge means failure to discharge the burden of proof. Okay, failure to discharge results in the party's failure in the case. OOP re, failure to discharge may weaken the party's position. Failure to discharge may weaken the party's position but does not necessarily lead to failure. Failure to discharge, okay, onus of proof. Failure to discharge may weaken the party's position but does not necessarily lead to failure in the entire case. But does not necessarily lead to failure in the entire case. Sir, could you Yes. repeat the burden of proof one? Burden of proof, failure to discharge, okay, or you can write in full. Failure to discharge means here we are talking about failure to discharge the burden of proof. Okay, so failure to discharge results in the party's failure in the case. It will lose the case. Okay, failure to discharge results in the party's failure in the case. Onus of proof re, failure to discharge may weaken the party's position but does not necessarily lead to failure in the entire case. Got it, sir. Okay. Out जोटा number 9 we have already written there. Okay, से जो 5 mark question पे सेटा हला nature. हमें देखतिलु BOP is substantive in nature and your your burden onus of proof OP is that is basically procedural. Okay, in nature. What does it mean? Let us see the. So nature re lekhantu first BOP under re burden of proof under re substantive and relates to legal obligation to prove a case. So nature ta tara substantive. Okay, so burden of proof substantive and relates to legal obligation to prove a case. Substantive and relates to legal obligation to prove a case. Onus of proof, तार nature कौन procedural. Okay, so OP
procedural and pertains to the duty of procedural and pertains 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 to the duty of producing evidence at various stages. Procedural and pertains to the duty of producing evidence at various stages. Okay. तापर लास्ट रे आपण एग्जांपल्स दे परिबे दैट यू कैन गिव ऑफ योर ओन कि एग्जांपल हमें देइछु से जो 5 मार्क्स रो में ये करथिलो सेही एग्जांपल भी आपण दे दे परिबे ओके दैट प्रोसिक्यूशन प्रूविंग गिल्ट इन क्रिमिनल केस सेटा एग्जांपल कोनोसी क्रिमिनल केस ओडा मर्डर थेफ्ट जहा भी आपण दे देबे ओके आउ एपटे आपनकर अक्यूज्ड प्रूविंग एलिबी वंस डिफेंस इज रेज्ड माने जदी जने कहूची कि मु सेतबेले नथिली he has raised the defense of alibi prosecution कहूची एई मारची ता कहया कथा मु भाई सेतबेले नथिली सेठी मु अलगा जगह रे थिली तो प्रूफ करो so onus of proof shifts to him okay now he has to give the proof और जदी से strong proof दे देला okay then it again shifts to the prosecution कि तो establish हे गला ये नथिला एठी और आपण माने कहउछन कि ये एई मारची okay so that example you can give. So if you want to take it down, you can take it down. Example, okay, BOP रे लिखंदु. In a theft case, the criminal case ना अपन murder लिखंदु अभी एटी हमें theft देखो. In a theft case, the prosecution must prove that in a theft case, the prosecution must prove that the defendant committed the theft. In a theft case, the prosecution must prove that the defendant committed the theft. Onus of proof re, if the defendant claims an alibi, onus of proof re, if the defendant claims an alibi, the onus shifts to them. माने defendant को shift करिवो. If the defendant claims an alibi, the onus shifts to them to provide evidence supporting that claim. The onus shifts to them to provide evidence supporting that claim. Sir, supporting that? Claim, CLAIM. जो कहउछन कि मु क्राइम हला बेले नथिली सेठी. Okay, so eta hela the concept of burden of proof or onus of proof. ठीक. Then when we go to 104, तेतरे हमें तार statutory analysis करिया माने statute रे जा दिया हिची सेटा हमें पढिबा डिटे. एटा हला general concept. This is the overall concept. Sir, ठीक. हां सर जदि 10 मार्क्स रो पडिबो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ रे डिफरेंस टा पडिबो ताहले हमें आगो व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाट इज ओनस ऑफ प्रूफ लेखि कि एमदी 10 रे डिफरेंस दबो ना जदि टाइम कम थिबो ओनली 10 टा पॉइंट स्पेसिफिक माने लिखि दे कि पडे असली भी हबो टाइम कम थियो माने कोन देखंतु एटा प्रोसीजरल पेपर रो पार्ट तेनु प्रोसीजरल पेपर रे आपण जानचंती आपण को 1 मिनिट 1 मार्क को 1 मिनिट मिलुची तेनु जदि 15 मार्क की 10 मार्क रो क्वेश्चन पडला आपण को 10 मिनिट मिलला तेनु 10 मार्क क्वेश्चन पे बेटर आपण एक्सप्लेनेटरी वे रे सेकंड टाइप रो जेमति लिखिले सेमति लिखि देबे हेई जीवो 10 मिनिट रे असुविधा नै ओके बट जदि आपण को एटा 5 मार्क्स रो पडला and you know 10 points ताले हमें जेमति फर्स्ट कॉलम मेथड करथिलु सेमति कॉलम मेथड रे दे देबे कॉलम मेथड रे आपण जत्ते पॉइंट्स जत्ते भल रे भी लिखले 10 मार्क रो 6 रो ऊपर मिलिया भारी कष्ट ठीक अछि तो बट आपण एनालिसिस मेथड रे लिखिले ते आपण टिके अधिक पाइ जे परिबे जदि सब ठीक ठाक लिखछन ओके आपण 10 मिनिट्स से केते लिख परिबे धरंतु 225 वर्ड्स पर मिनिट माने मैक्सिमम आपण को स्पीड रे मु नउची पर मिनिट है आपण 10 मिनिट मिलची ता माने 250 वर्ड आपण लिख परियो ऑलमोस्ट 1 फुल पेज आपण लिखि परियो
ठीक अछि केते पिला टिके प्रैक्टिस कला परे तांकर 25 वर्ड्स पर मिनिट रू ऊपर को भी पळे तेणु it all depends on practice. Some of you are practicing regularly. You write anything and everything that I tell you to write. So सेटा that is quite good. आपनकर practice सेटा बहुत proper होची. Okay. But जिनसटा आपनकर दीटा खाली मन रखिबे कि कंटेंट भलो थिबो आउ स्ट्रक्चर टा एग्जाम ओरिएंटेड थिबो. स्ट्रक्चर टा सिखिबाटा टिके सहज कहीं आप देखिए कंटेंट जिते पाठ आप पढ़े जिते टेक्स्ट बुक पढ़े जिते एनालिसिस करेंगे से कंटेंट पार्ट आउरी इवॉल्व करी करी जीवो ओके सो दिस इज बेसिकली योर द concept of burden of proof and onus of proof ठीक है so we'll take a break for 5 minutes after that आउ गोटे पार्ट अच्छी पार्ट तो नुह सेटा गोटे खाली पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देबी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट्स ओके लॉज जोड़ा आसी आउ ए बीएसए रे जदि कोनोसी गोटे टर्म डिफाइन हेनी ताहले कौन हबो आउ सेटा से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्लस बाकी दीटा नुआ अमेंडमेंट्स जोड़ा हैला नुआ लॉज दैट इज द भारतीय ओके बीएनएसएस आउ बीएनएस राइट सर सो आउ थरे जो आपण कहउतले जे बीएसए आउ जो हमर एविडेंस एक्ट रे दीटा करे जो बर्डन ऑफ प्रूफ रो कोन चेंज हेची सेटा भी टिके कहि देबे सेटा मु सेई टाइम रे बर्डन ऑफ प्रूफ टा इफ आई मोर एग्जैक्टली मन पड़नी बोधे 101 101 रे रे थिला थिला 101 रे थिला रो 104 अछि एबे 104 अछि नहीं तार स्पेसिफिक जो सर्कमस्टेंसेस थिला गोटे मेजर चेंज तार या हेची कि इंडियन एविडेंस एक्ट रे से गोटे बहुत स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स ऊपर सेटा देइथिला मेनली आपनकर लैंडलॉर्ड आउ टेनेंट रो ओके आउ सेटा भी तार कांसेप्ट सब थिला फॉर एग्जांपल से को पर्यंत से रिलेशनशिप टा रहिबो जेतेबेले तांको रिलेशनशिप टा सरी जिवो ओके बर्डन ऑफ प्रूफ टा तांको ऊपर काम करिवो कि नहीं राइट तो सेगुडा टिके चेंज हेची हमर बीएसए रे ओके कोन ना से केवल लैंडलॉर्ड आउ टेनेंट रिलेशनशिप नु एबे बहुत गुडे रिलेशनशिप को ता परव्यू रे आनी देची ओके तो सेमती किछि टेक्निकल चेंजेस आपनकर हेची burden of proof रे okay तो सेटा हमें once we go there we will study that in detail right so ओके सर सेटा गोटे मेजर आपनकर 2-3 major changes are there in the concept of burden of proof relative to Indian Evidence Act okay so you go through what you have written be ready with your doubts so सेटा first मुझे कहि देबी then we will do the questions what we have studied today ठीक अछि that is on the burden of proof okay we'll take a break for 5 minutes
Okay, so let us continue. So Bare Act को आसंतु. Okay, section 2 रो. So जो general सब definitions देइथिला, we have covered everything, right? आउ खाली गोटिए part रहिला definitions ପରେ जोटा देइची. Okay, सेटा टिके देखिबा. So this is a technical thing कि जो term रो meaning किंबा definition एठी दिया ही नहीं, किंतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रे दिया हिची किंबा बाकी बीएनएस की बीएनएसएस रे दिया हिची, ताहले the term will have the same meaning as given in them. Words and expressions used herein and not defined but defined in Information Technology Act, the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita and the Bharatiya Nyaya Sanhita shall have the same meanings as assigned to them in the said act and Sanhita. Okay. So, सप्पाने एठी किछिटा अपन टर्म यूज करछन, लेट्स से अपन लेट्स से किछि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूज कले, डिजिटल रिकॉर्ड यूज कले सपोज, किंतु एटा डिफाइन हेनी बीएसए रे, किंतु आईटी एक्ट रे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रे डिफाइन हेछि, ताले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रे जार तारो जहा कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीनिंग सेटा ही रहइबो. सेमति आउ किछिटा जोटा बीएनएसएस रे डिफाइन हेछि कि बीएनएस रे डिफाइन हेछि, किंतु बीएसए रे यूज हेछि बट डिफाइन हेनी. ओके, ताहले से जो कॉन्टेक्स्ट और जो मीनिंग रे बीएनएस की बीएनएसएस रे यूज हेछि सेही कॉन्टेक्स्ट रे एठी भी यूज हो. बुझ परले? सो दिस इज जस्ट अ टेक्निकल पॉइंट, राइट? तापरे नेक्स्ट जोटा की relevancy of facts, we will start from tomorrow. Now let us go to the questions. First question that देखो, in a civil lawsuit, if the plaintiff establishes a prima facie case, what is the immediate effect on the defendant? Okay, it already हमें तारो difference रे discuss करिछु. So please go through it. कौन होगा आंसर? So C. Others? C. C. Okay, that's correct. Huh? C will be the answer. The onus of proof shifts to the defendant to present evidence countering the plaintiff's claim. Now come to question 2. In a criminal trial, the prosecution presents strong evidence of the defendant's guilt. The defendant then introduces an alibi. How does this affect the evidentiary responsibilities of the parties? Just go through it. Count up answer. B, sir. B before Bravo. Na D gochundi. D for Delta. Sir, B कहुचे. Acha B. Sir, D. D. Okay. Sir, D for Delta. Okay. Others? अच्छा, इटी कौन है देखो, क्रिमिनल ट्रायल रे प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट स्ट्रांग एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट्स गिल्ट. स्ट्रांग एविडेंस, ओके, कि से ही गिल्टी अछि, स्ट्रांग एविडेंस प्रेजेंट कराइ. द डिफेंडेंट देन इंट्रोड्यूसेस एन अलाबाय. तो से गोटे एक्सेप्शन नेला, ठीक अछि, किंबा गोटे किछि नुवा जिंस से इंट्रोड्यूस करछि गोटे एविडेंस रे. ओके, दैट से टाइम रे मु नथिले. ओके, so how does this affect the evidentiary responsibilities of the parties? ठीक अछि, जो डिफेंडेंट से कहउची से प्ली ऑफ एलिबाय नउची, ताले सेठी तारो पोजीशन ता केमती चेंज हे गला एविडेंशियल
रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब रे माने ताकू एबे कोन एविडेंस दबा पई पड़ियो ओके सो वी नो दैट बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ रो डिफरेंस ता में देखिथिलु ओके एठी ओनर्स ऑफ प्रूफ ता कहा को शिफ्ट करिवो सीए तो गोटे क्लेम नेला ना एलिबाई रो ताकू एबे प्रूफ करिया प्रोसिक्यूशन को सर हां प्रोसिक्यूशन को सर प्रोसिक्यूशन तो प्रूव ही कर सर देला ओके स्ट्रांग सर एविडेंस ताकू देला प्रूफ करियो पड़िबो कि से बाहर कोठी थिला बोली से एल्सवेयर कौन थिला कहला बोली से जे कहूची सर जे प्ली हाँ ऑफ क्वालिफाई नउची से बर्डन ता ऊपर ही अछि जे ताको सेटा को प्रूफ करियर अछि जे से ही इज एल्सवेयर एग्जैक्टली ता माने बर्डन टा एबे ओके डिफेंडेंट ऊपर आसी गला सी एबे क्लेम करला प्ली ऑफ एलिबाई नेला ही हैज टू प्रूव दैट राइट सो सी रो ओके चांसेस आपनकर बेसी अछि करेक्ट आंसर हबर एथरे मल्टीपल मोटा कहि छी एमसीक्यू क्वेश्चंस रे व्हेन देयर आर मल्टीपल आंसर्स जोडा कि आपनको ठीक लागु छी ताहले जोडा सबुठु क्लोजेस्ट किबा जोडा सबुठु ठीक जोडा सेटा किबा जार वैल्यूटा सबुठु स्ट्रांगेस्ट आपण सेटा को चूज करिए एठी क्वेश्चन टा बुझंतु क्वेश्चन टा से कोन पचाउछ हाउ डज इट अफेक्ट द एविडेंशियरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पार्टीज ओके सी जरे प्ली ऑफ एलिबेटा नउची नेला परे एविडेंशियरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पार्टीज केमती चेंज होची ऑलरेडी तो प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग एविडेंस प्रेजेंट करि सर्च दैट डिफेंडेंट इज गिल्टी ठीक अछि तो सी तो काम कर देला तारो किछि सेतरे करिवार नै ये कहूची नै ये प्ली ऑफ एलिबे नै ठीक अछि तो एबे आकु ही प्रूफ करे पे पड़िबो डिफेंडेंट को ही प्रूफ करे पड़िबो सो understand the question question is how does it affect the evidentiary responsibility of the parties so onus of proof shifts to the defendant onus of proof okay to establish the alibi se claim kala mu nothili eti a gote jagare achi okay तापरे आउ गोटे सेठी टर्म से यूज कला ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ठीक अछि बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज राइट माने कोन जोटा हमें 500 किलोमीटर आउ 200 मीटर रो एग्जांपल नौथलु ओके बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैज मेनी कंपोनेंट्स बट मुसे पढेनी मुसे थ्योरी की जाइनी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओके क्रिमिनल लॉ रे सेटा बहुत इंपोर्टेंट राइट व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन 200 मीटर रे भी जदी से प्रूफ कर दउ कि मु 200 मीटर रे बसथिली ताले भी चांस अछि ओके प्रॉक्सिमेट अछि से राइट से 500 किलोमीटर दूर रे थिला ठीक अछि ताले रिमोट हे गला सेटा जनरली ओके करिवाटा ताको डिफिकल्ट होबो आसी कि सेठी क्राइम टा करी कि पुनी 500 किलोमीटर को जीवो बुझि परले दैट इज द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओके दैट डिफेंडेंट हैज टू डेमोंस्ट्रेट दैट you know it is more likely that he could not be present there okay so देखिबा सेटा these are important concepts we will see at that time आपण बुझि परले तो you understood the question टा कोन पचरला and why C will be the answer से कहूची कि प्रोसिक्यूशन तारो एविडेंस दे देला डिफेंडेंट क्लेम कला एलिबाई रो प्ली ऑफ एलिबाई नेला ओके एविडेंशियरी रिस्पांसिबिलिटी एबे को दीटा पार्टी रो केमिति चेंज होला ओके आरो तो किछि कहबार नै प्रोसिक्यूशन रो से तो ऑलरेडी सेटा प्रूफ कर दिछ राइट किमा तारो जा कहया तो सेटा से कहि दिछ ओके आउ नाउ इट शिफ्ट्स टू द okay your defendant now he has to prove that okay his job is a plea of alibi okay someone was raising a hand you can just ask your question okay mujhe ye re thi bhi so it will be difficult for me to see that you need not take any permission or raise your hand directly sorry apna sir it was a mistake ha directly apna ja bhi pachariya katha even in when I'm teaching you can directly ask you don't have to wait for last रे जांगी पचारिबो कि जोटी जा डाउट हैला सेठी इंटरप्ट करी पचारि परिबे किछ असुविधा नै सो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट बुझि परले तो सी विल बी द आंसर हियर सब बेले मन रखिबे जो क्वेश्चन टा कोन पचाउची मेंस रे भी से मेंस रे त हम अंडरलाइन कर दोछु सेटा ओके जेतरा हम आंसर राइटिंग करूछु वी अंडरलाइन द डायरेक्टिव कीवर्ड्स ठीक है तो एठी अपन को मन रखिया रहती से कोन पचाउची नंबर 1 ओके and if you get a situation where you feel that more than one answers are correct, then go with the
मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हैला मोस्ट एप्रोप्रिएट जोटा आंसर सेटा को आपण नबार अछि तापरे नेक्स्ट 3 की आसंतु हाउ डज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ differ between prosecution's burden and defendant's onus while asserting a defense in a criminal trial. Okay, so just go through it. So B. Yes, B is the correct answer. आउ ए दीटा ना ए जो दीटा से माने जो टर्म से यूज कला गोटे हला बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओके एंड आ गोटे हला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट क्रिमिनल लॉ रे और जनरली एविडेंस लॉ ओके तो एटा दीटा मन रखथिबे गोटे गोटे क्लास खाली आर ऊपर ही जीवो ओके काहे ना तारो डिफरेंस ता बुझिया पे यू हैव टू टेक ए लॉट ऑफ केस लॉज एक्सेट्रा ठीक है तापरे नेक्स्ट फोर्थ को आसंतु फोर्थ पॉइंट को फोर्थ क्वेश्चन in a civil case involving alleged professional negligence the defendant is presumed to have acted with due care what must the plaintiff demonstrate to overcome this presumption okay question ta bujhundu age civil case re professional negligence upare case ta aichi defendant is presumed to have acted with due care presumed to have acted with due care so एबे plaintiff को कौन demonstrate करिया पड़िबो to overcome this presumption कौन होगा So एटा D, I think. B. D maybe. D is correct okay अब मु बेसिया को Sir, explain D करनी for कहना delta. हाँ D for delta yes D for delta is correct Okay. okay fourth question ta D for delta that is correct the plaintiff must establish on the balance of probabilities that the defendant breached their duty of care okay then last question in a criminal trial if the prosecution establishes a presumption of fact against the defendant how does this impact the defendant's evidentiary obligation एटा आगुरु जो से क्वेश्चन ता देखथुलु ना मोर और लेस सेम टाइप रही अछि क्वेश्चन 5 टा B. B will be the answer okay the onus of proof shifts to the defendant to provide evidence countering the presumption on balance of probabilities balance of probabilities concept we'll study okay the appropriate time अच्छा एटा में जो देखिलु ओनस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और बैलेंस ऑफ ओनस ऑफ प्रूफ और बैलेंस ऑफ प्रूफ आर इंपोर्टेंट केस लॉ जोड़ा मु कहनी तो इंपोर्टेंट केस लॉ जोड़ा टिके लिखि दियंतु बहुत जोड़ा अछि और जोडो लैंडमार्क और मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ा सेटा जस्ट वी नीड टू नो ओके सेटा नोट रे लिखंतु भूल जाई सेटा कहया पे सो दीस आर द क्वेश्चंस आउ ये क्वेश्चन टा आगे नहीं जानतो देन वी विल जस्ट तीनटा ही केस लॉ में देखि देबा कौन से केस लॉ रे कौन बेसिकली कहै छै सो take the MCQ question MCQ तो सरला आपनकर मेंस क्वेश्चन लिखंतु ओके सिंपल क्वेश्चन अछि differentiate between between burden of proof and onus of proof in criminal cases तो इटी सेटरे एक्सेप्शंस भी देबे पक्षर देबे अदर एक्सेप्शन also दे जेतु मु खाली पक्ष डिस्कस करछ अपन पक्षटा दे परिबे ठीक है ओनली क्रिमिनल केसेस में लिखिया रहछ हमको आउ पुनी
क्वेश्चन रे जति पचारिबो सेति लिखिबे सेति भलरे लिखिबे आउ ता एंसिलरी जिंस ओडा पाखा पाखी जिंस ओडा बहुत लिखिया दरकार नहीं अनलेस इट इज ए हाई मार्किंग क्वेश्चन पर्सनल लॉ रे जेमति 25 मार्क अछि राइट एथरो पर्सनल लॉ रे बहुत भलो मार्क्स आसीनी राइट बहुत पिलांगर पर्सनल लॉ रे मार्क्स कमी छि इवन जो माने की भलो रैंक भी रखचंती नॉर्मली अलगा पेपर्स को जदी हमें देखिबा तो पर्सनल लॉ पेपर टा टिके ये ओके ओके केते पिला कटि चंदी से पेपर एनीवे नाउ कम टू द इंपोर्टेंट केसेस okay so first case ta that is N Narayan Rao versus state of Andhra Pradesh 1971 ro case ta okay so just gote line lekhandu held that burden of proof facts held that burden to prove facts always lies on the prosecution burden to prove facts always lies on the prosecution always lies on the prosecution second case state of Rajasthan versus Kashiram 2006 ro case eta state of Rajasthan versus Kashiram Sir, here. this is 2006 okay state okay state of Rajasthan versus Kashiram 2006 actually year ta na kebe kebe you should know that क्या ना बहुत गुड़े cases same ना रे थिबो but सेटा पुनी changes होची से थरे right आउ थरे okay for example Joseph Shine case ठीक है सेटा 2018 रो भी 2023 रो भी ठीक है 2023 रे कोन से 2018 केस ऊपर सुप्रीम कोर्ट पुनी सुप्रीम कोर्ट को आर्मी गरिका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफिकेशन मागिले कि सेटा आर्मी रे भी आर्मी एक्ट नेवी एक्ट एयरफोर्स एक्ट करिकारे आपण जो जजमेंट देथिले 2018 रे जोसेफ शाइन केस रे जो थरे आपणकर ओके सेम सेक्स यू नो रिलेशनशिप्स गुडाको ओके ताको आपण लीगलाइज तो नो बट डिक्रिमिनलाइज कर देथिले तो सेटा एबे हमें नेवी एक्ट आर्मी एक्ट आ एयरफोर्स एक्ट ऊपर लागू होबो कि okay so that was the question same case ऊपर इतला but years were different right सेति पई year टा भी लिखिबा दरकार so explain the distinction between burden and onus and how shifting operates in trials okay so that is an important case केमिति सेटा burden of proof और onus of proof टा okay onus of proof टा केमिति shift होछ explain the distinction between burden and onus explain the distinction between burden and onus and how shifting operates in trials and how shifting operates in trials third case Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company versus ESI Corporation 1971 the case Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company versus ESI
perforation. नाइनटीन 71 केस एटा तो एथरे कोन को गला इन सिविल केसेस the parties asserting a right the party asserting the right has the burden to prove the facts comma but the onus may shift the onus may shift বুঝিপারলে so that is basically the concept of burden of proof, okay, and the concept of onus of proof, right? Any doubts if you have, you can ask, else we'll stop today. Our kalitu ame part 2 ru start kariba, okay, chapter 2, relevancy of facts. Fine, so we'll stop then. Thank you all. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaste. Thank you, sir.